morning students, welcome back to SST class of 7. Children, in our previous video, we had completed the exercise discussion and question answer of chapter number 9 of civics, that is towards equality, and I hope everybody have understood it well and have written the notes in their copy. So children, today I will be starting a new chapter, that is your पेन पेपर टेस्ट चैप्टर. आपके पीरियोडिक सेकेंड का ये सिलेबस का थर्ड चैप्टर है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, एंड दिस चैप्टर इज फ्रॉम हिस्ट्री. ओके, इट इज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मुगल एम्पायर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मुगल एम्पायर. एम्पायर मतलब साम्राज्य या डायनेस्टी. तो इसमें हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी मुगल्स हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द मुगल्स एस्टैब्लिश्ड अ ह्यूज एम्पायर. हमें पता है जो मुगल्स थे वो बहुत ही क्या थे, फेमस थे. लेट अस ओपन द बुक, पेज नंबर 40. ओके, द मुगल्स एस्टैब्लिश्ड अ ह्यूज एम्पायर. उन्होंने बहुत ही ह्यूज एम्पायर एस्टैब्लिश किया. They were good administrators, brave warriors, and left a political legacy that keeps them still alive. And वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और अच्छे वॉरियर्स, योद्धा भी थे, जिसके कारण वो अभी तक याद किए जाते हैं. Many sources of medieval history prove that the royal Mughal emperors were truly interested in keeping the records of their achievements and other aspects of their reigns. और हमने पढ़ा है कि मेडिवल हिस्ट्री के दो सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. ठीक है, तो उससे हमें ये पता चला कि जो मुगल्स थे वो बहुत ज्यादा शौकीन थे. वो अपने बारे में क्या था उसका रिटन रिकॉर्ड रखना चाहते थे. ऑटोबायोग्राफीज सच एज बाबरनामा एंड जहांगीरनामा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एफर्ट्स. और इसी का एग्जाम्पल है बाबरनामा और जहांगीरनामा, जो कि ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? मीन्स अ स्टोरी रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ. ठीक है. द फर्स्ट 6 मुगल्स वेर कॉल्ड द ग्रेट मुगल्स. जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 6 मुगल्स थे, लाइक बाबर, अकबर, हुमायूं, उन्हें क्या कहा गया? ग्रेट मुगल्स कहा गया. ठीक है. आइए अब सबसे पहले पढ़ते हैं बाबर, द फर्स्ट मुगल. बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर. He was born in a small place called Fargana in Central Asia. So he was the first Mughal emperor and he was born in Fargana in Central Asia. It was at the tender age of 12 years that he became the ruler of Fargana in 1491. और जब वो 12 साल के थे तभी वो किंग बन गए फरगाना के in year 1491. Babur tried to conquer Samarkand but failed. In 1504 he conquered Kabul. When Babur was ruling Fargana in Central Asia, at the same time the Lodhis were ruling over the Delhi Sultanate. तो जिस टाइम बाबर फरगाना में रूल कर रहे थे उसी टाइम लोधीस इंडिया में दिल्ली को रूल कर रहे थे. The local rulers were not happy with the Lodhis. और जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे वो हैप्पी नहीं थे लोधी के एडमिनिस्ट्रेशन से. As a result, they sent a message to Babur to come to India and defeat the Lodhis. और इस कारण उन्होंने बाबर को मैसेज किया कि प्लीज कम एंड डिफीट लोधी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप यहाँ पे शुरू कीजिए. More than the invitation, it was the wealth and richness of Hindustan that lured Babur to plan an expedition to India. और इनविटेशन से ज्यादा वो हिंदुस्तान, जो कि इंडिया के बहुत ही ज्यादा उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके रिचनेस से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड था और वो इंडिया को क्या करना चाहता था? एक्सपेडिशन करना चाहता था, उसको पूरी तरह से रूल करना चाहता था. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. In 1526, Babur faced Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. So Babur came and he fought with Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. The Lodi army was huge when compared to that of Babur's, but Babur had a good cavalry. Cavalry मतलब क्या होता है? Yes, cavalry means part of the army that fought on horses. जो घुड़सवार सेना होती है, तो उसके जो बाबर के पास घुड़सवार सेना बहुत अच्छी थी. ठीक है. Without much difficulty, Babur defeated Ibrahim Lodi and conquered Delhi and Agra. और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में
बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और आगरा और दिल्ली को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया. नाउ द बैटल ऑफ खानवा. द फॉलोइंग ईयर इन 1527, जस्ट 1526 के बाद नेक्स्ट ईयर 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ. बाबर फॉट दिस बैटल विथ राणा सांगा ऑफ मेवाड़, और उन्होंने किसके साथ युद्ध किया? राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे. एंड ही डिफीटेड हिम ऑल्सो. 2 years later he also defeated the Afghan chief of घगारा, और इस तरह वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग हो गए नॉर्दर्न इंडिया में. ठीक है. एंड ही डाइड इन ईयर 1530, और 1530 में उनकी डेथ हो गई. नाउ द सेकेंड मुगल रूलर दैट इज हुमायूं. ओके. द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, जो सबसे बड़े थे बाबर के लड़के, वो हुमायूं थे. उनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, एंड ही सक्सीडेड बाबर इन ईयर 1530 आफ्टर हिज In year 1530, Humayun had 3 brothers, Kamran, Hindal and Akari. Okay, and the name Humayun means lucky, but unfortunately in reality his life was full of problems. As a ruler, he faced many problems and did not get the actual support of his brothers. So we can say that his life was divided into 3 phases. The first phase, the second phase and the third phase. Let us have a look over the first phase. It was between 1530 to 1540 and was a time of struggle and stress. He faced a tough struggle against शेर शाह सूरी of Bihar and बहादुर शाह of Gujarat. तो उसको टफ टक्कर दे रहे थे शेर शाह सूरी और बहादुर शाह from Gujarat. In 1532, Humayun and शेर शाह fought a battle for the first time. और पहली बार ईयर 1532 में शेर शाह सूरी और हुमायूं ने पहली बार बैटल लड़ा. हुमायूं won and captured the fort of Chunar, and उसमें हुमायूं जीत गए. ठीक है. Then शेर शाह attacked again and this time Humayun was defeated, और इस बार वो दोबारा हार गए. Then in the second phase, that is 1540 to 1545, the Afghan king शेर शाह सूरी annexed his empire, और इस टाइम शेर शाह सूरी ने सेकेंड फेज में उनके एम्पायर को एनेक्स कर लिया, हासिल कर लिया, एंड थ्रोन हिम आउट ऑफ हिज किंगडम, और अपने उनके किंगडम से उनको बाहर निकाल दिया. Humayun became a refugee and escaped to Persia, and Humayun became refugee. He used to wander here there, then he went to Persia. He spent the next 15 years in exile, और उन्होंने 15 साल एक एक्साइल के रूप में बिताया. And during that time the Sher Shah Suri became the supreme power in India. Okay, now in the third phase, that is 1545 to 1555, Humayun made Kabul his base. हुमायूं ने काबुल को अपना बेस बना लिया, and he started preparation to attack शेर शाह सूरी and get the supreme power of Delhi again. And during that time he attacked शेर शाह सूरी and became successful also and got back the throne of Delhi. But वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाए because he fell down from the stairs of library शेर मंडल and died in 1556. Sher Shah Suri. Sher Shah Suri was the most famous ruler of the Sur dynasty and was the son of an Afghan Jagirdar from Jaunpur in Uttar Pradesh. Okay, then the real name of Sher Shah was Farid Khan. जो real name था वो था फरीद खान. He was given the title of Sher after he killed a tiger. और उनको नाम मिला शेर क्यों? Because once while hunting he killed a tiger. Although Sher Shah was a fine ruler with exemplary qualities, but the Sur dynasty did not survive for long. तो जो सूर डायनेस्टी थी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली. Now what are the achievements of Sher Shah Suri? Sher Shah became the Sultan of Delhi after defeating Humayun in 2 battles. So after defeating Humayun, Sher Shah became the king of Delhi. In a short period of 5 years, he built a strong kingdom. और बहुत ही कम समय में 5 सालों में उन्होंने strong kingdom build कर लिया. His empire extended from Jhelum to Brahmaputra and Himalayas to Narmada.
Known for his excellent administrative skills, शेर शाह also improved the administration of his territories. और साथ ही साथ उन्होंने अपने territories का administration भी बहुत अच्छे से किया. शेर शाह had a large standing army. उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी. He continued with Alauddin's practice of branding the horses. और साथ ही साथ वो cavalry यानी घुड़सवार पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते थे अपनी आर्मी में. Then वेलफेयर मेजर्स अगर हम देखें तो उन्होंने लोगों के लिए क्या किया. शेर शाह इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कंसर्न एंड वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. वो अपने प्रजा के बारे में बहुत सोचते थे. अब्बास शेरवानी रोट द हिस्ट्री ऑफ शेर शाह इन 1579. ही ऑब्जर्व दैट ए फिलोंथ्रोपिस्ट एट हार्ट शेर शाह वॉज जेनरस. तो जो शेर शाह थे वो बहुत जेनरस दयालु थे. He gave specific orders that anyone in need of food should be fed at the king's kitchen. उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अगर कोई भी भूखा है तो उसको किंग के किचन से तुरंत खिलाया जाए. He constructed an excellent network of roads in his empire. GT road, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, that is an highway constructed and was called सड़क-ए-आज़म और हाईवे. तो जो हमारा GT रोड है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? Yes, शेर शाह सूरी. It starts from Sonagarh in Bengal and then passes from Lahore in Punjab and ends at Multan. The second road is connected to Multan via Lahore. Okay, then the trade and commerce flourished at the interest of merchants were taken care of. और उनके टाइम में ट्रेड और जो कॉमर्स था बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा था, फैल रहा था और मर्चेंट्स भी सेटिस्फाइड थे. He reduced custom duties and introduced a new coin called रुपया. और उन्होंने कस्टम ड्यूटीज जो टैक्स लगता था उसको कम कर दिया और नया कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रुपया. इट रिमेन अ स्टैंडर्ड कॉइन फॉर सेंचुरीज. और कई सेंचुरीज तक, सालों तक ये कॉइन चला. शेर शाह वॉज ऑल्सो नोन फॉर प्रोवाइडिंग एन इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम. और शेर शाह बहुत फेमस थे कि वो बिना पार्शियलिटी के लोगों का न्याय करते थे. ओके, so this was about today we have studied about in today's class the Babur, okay, about the Babur, the Humayun and the Sher Shah Suri. In our next upcoming video we will be discussing about the rest of the Mughal emperors. Okay, so children, today's homework is question number 1, why did Babur come to India? Question number 2, who were the great Mughals? Question number 3, who was defeated in the first battle of Panipat by whom? Question number 4, who was Sher Shah Suri? Question number 5, what does the word Humayun mean? And question number 6, who wrote the history of Sher Shah? So these question answers you have to write in your homework copy and go through the chapter and learn the key terms and underline the important points. That's all for today. Thank you, class.